हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने भारत पर पूछा ऐसा सवाल, भड़के जयशंकर ने दिया करारा जवाब। चलो देखें, मजा आएगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Hello, my name is Jaishankar. I'm from Pakistan, from Aaj TV, and my question to you over here is that the Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari made a bold move by coming here, and it is being seen as a breakthrough. He is also being criticized, but how do you India see it? Do you see it as a breakthrough, and what will be your roadmap in the future to resumption of at least diplomatic ties with Pakistan? Sir, perhaps 4 questions. I'll hand over to you, sir. देखिए, 3 सवाल जो हैं वो पाकिस्तान पर थे, एक सवाल जो है वो चाइना पर था। तो ये 3 सवाल जो पाकिस्तान वाले सवाल जो हैं मैं एक साथ लेना चाहूँगा ताकि बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से दिस, एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. ये भी की बात हो रही है। Let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor. I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it. And I assure you, those who are in the room today had no doubt about it. वाह, I made sure of that. Regarding इस बारी भी श्योर किया लग रहा है। आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था। Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India, and the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि from what I understood that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. I like this one. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. पाकिस्तान वाली तो I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. So you know, let's be clear what this is about. On your question, you know, is this a breakthrough? Look, he came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is part of multilateral diplomacy. Please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. And I think nothing that from what he said or what I heard he said deserves for this to be treated more than that. The China question.
Look, my understanding of what the Chinese said, I think they used the word stable, if I'm not mistaken. कौन सा word stable? I don't think that's the issue. I think the issue is that there is an abnormal position in the boundary areas, border areas, along the boundary. And we had a very frank discussion about it. It's not the first discussion. I had spoken to Foreign Minister Chingang on the sidelines of the G20 as well. We have to take the disengagement process forward. And I have made it very clear, frankly, publicly as well, and what I say within the room is not different from what I say outside, which is that India-China relations are not normal and cannot be normal if the peace and tranquility in the border areas is disturbed. I've been And very, very exciting clear is about not it. returned I've been back. consistent about it. देखो भाई ऐड करना पड़ता है वहाँ पियो के यहाँ exciting. At this meeting either. Thank you, sir. Listen, before, in the interest of efficiency, please do not repeat similar questions or try to come back to it. I think, so I'll take fresh questions on that. Maha? Yeah. Sir, Maha Siddiqui from NDTV. Sir, how does India view being part of an organization which is now largely being viewed as an anti-West grouping? SCO की बात हो रही है ना. सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से. आपने कहा कि G20 से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा श्रीनगर में जो पर्यटन के मसले पर बैठक हो रही है, वक्त पर ऐसा जवाब देंगे कि उनको याद रहेगा. इस स्टेटमेंट को भारत कैसे देखता है? देखिए, हम पागलों की बातें सुनते ही नहीं. जवाब दे चुके हैं. मैं इसका भी जवाब दूंगा. Yes, sir, please go ahead. मैं Thank you, बताता sir. हूँ. Nice. Yeah, gentlemen. Thank you. Dmitry Melnikov from Russian TV. Sir, was Ukrainian crisis part of today's discussion, and did Mr. Lavrov tell you about the recent attack on Kremlin in Moscow, and what is your point of view? Thank you. Yeah, go ahead. Yeah, you. Microphone coming to you. No, no, him. Yeah, right. हेलो सर ऋषिकेश. SCO में रशिया नहीं था क्या? तो कौन आया था रशिया से? कोई दिखा ही नहीं. कोई भी नहीं दिखा. डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? Manish, you want Manish? Yeah, microphone. We'll take this 5. बड़े सारे क्वेश्चन पूछा रहा. Sir, Manish Chand, India Rights Network. Just before his meeting with you, Chinese Foreign Minister was addressing a function in honor of Dr. Kotnis, where he spoke about people-to-people contacts and finding a new path of peaceful coexistence. Did you see any signal? वो बात कर रहा है peaceful coexistence. China. Some sort of restructuring. वही तो सबके कब्जे कर ही जा रहा है. Thank you, sir. Still the people-to-people part is important. Okay, let me start with the anti-West, is SCO perceived as an anti-Western grouping? Look, how people perceive it is something I cannot answer for. What I can say is it is a grouping where membership serves India's interests. India has a multi-directional foreign policy with many partners. मुझे इस बहुत अच्छा लगा. फ्रैंक टॉक किया. कोई इधर उधर की बात नहीं, स्ट्रेट पाकिस्तान को बता दिया. वो जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पूछ रही थी उसको तो उसकी तो बेइज्जती हो गई कि भैया मैं पाकिस्तान जैसे देश से आई हूँ. सीधा बोल दिया कि भैया हम विक्टिम हैं, तुम लोग करने वाले हो. तो भैया विक्टिम और करने वालों में कोई अच्छी रिलेशनशिप होने का मतलब ही नहीं बनता. तुम क्या बात कर रहे हो कि अब क्या रिलेशनशिप इंप्रूव होगी? यही बातें अभी ये पाकिस्तानी जब गए हैं तब भी ये कर रहे हैं. तो वही उसकी बात है. मैं तो कह रही हूँ कि इस अब इनसे जयशंकर से भी पूछना चाहिए जब इनके साथ इंटरव्यू हो कि भाई ये जो खाने के डिनर के टाइम में ये बंदा जो आके बैठा था उसकी कहानी बताओ, और वो क्रिकेट का क्या बोल रहा था, और हमारा क्या इंडिया का जो है इंडिया का क्या व्यू है क्रिकेट से लेकर के बारे में, जो पाकिस्तान में ये चैंपियनशिप जो ट्रॉफी खेल रहे हैं उसके बारे में हमारा क्या स्टैंड है, हमारा क्या व्यू है. और क्लियरली इससे पता चल रहा है कि एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान जो गए हम, हमारा कोई इरादा नहीं था कि हमें अच्छे रिलेशनशिप्स करने हैं या उनसे हमने मिलना है.
हम एससीओ मीटिंग जैसे अभी बोला है कि भैया एससीओ मीटिंग में हम मेंबर हैं, हम सिर्फ वहां पे अपनी मेंबरशिप की वजह से वहां गए हैं, उस मीटिंग को अटेंड किया है, और वहां पे भी हम इनकी जो है दोनों चाइना और पाकिस्तान इनकी सच्चाई जो है बाकी देशों को दिखा के आए हैं और वापस आ गए हैं। अब इसके बाद ये पाकिस्तानी क्या अपना ही गोल गलप्पा कर रहे हैं दिखा के कि भैया रिलेशन इंप्रूव होने वाले हैं, क्रिकेट हमारे यहाँ खेल रहे हैं, वो अपना ही वहां पे अपना एजेंडा चला के बैठे हुए हैं, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि क्लियरली हमारे थॉट्स दिख रहे हैं कि भैया जो टेररिज्म वाले हैं उनके साथ हम तो कोई बातचीत करने का सवाल ही नहीं होता यार। वो कितनी बारी क्लियर बोल चुके, इतनी बारी फैंटास्टिक। ये बल्कि जो बोल था वो कोशिश कर रहा था कि ऐसे क्वेश्चन से इनको बचाने की, ये क्या जयशंकर नहीं मैं तो आंसर करूंगा, ही वाज नॉट हेजिटेंट, कहता मैं तो सारे आंसर। उसके बाद बिलावल भुट्टो है भी नहीं फॉरेन मिनिस्टर, अब तो इशाकदार हो गया। हाँ तो वही ना, मतलब पर मैं इसको कनेक्ट कर रही थी इस बारी के वाले के लिए भी वही मेंटालिटी से और वही थॉट से हम लोग गए हैं। ये तो पाकिस्तानी पागल हैं जो अपनी न्यूज बनाने के लिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं, वैसे दिमाग तो है नहीं उनमें कुछ। तो चलो यार अब भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।